and welcome back. We were studying marginal costing and break-even analysis. तो break-even analysis क्या होता है, उसकी calculation कैसी होती है, concept क्या होता है, ये हमने previous videos में पढ़ा और एक practical problem break-even point calculate करने का in units ये हमने किया. Now break-even. Let's do another practical problem, and from this problem we will move to the next concept in this chapter. तो जल्दी से refresh करने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सिंपल सी प्रॉब्लम है. ये डेटा आपके पास है. सेल्स का नंबर है 1 लाख. द अमाउंट इज़ 1 लाख फॉर 10,000 यूनिट्स. सो इट्स बेसिकली 10 रुपीज़ पर यूनिट. Variable cost 40,000 है for 10,000 units, so it's 4 per unit. Contribution, that is sales minus variable cost, that is 60,000, so that is 6 per unit. Out of the contribution, if you remove the fixed cost, which is not per unit, ये period के लिए, पूरे महीने के लिए fixed होता है, what will remain is profit. Okay. So it's very simple. Let's calculate for this data the break even point. तो break even निकालने का previous videos में हमने concept already discuss किया है. I'm not repeating that. Please watch that if you haven't before watching this. Break even निकालने का simple तरीका होता है fixed cost divided by per unit contribution. Per unit contribution कितना है? Total contribution is 60,000. Number of units is 10,000, so 60,000 divided by 10,000, that is 6 per unit. Per unit contribution is 6, so fixed cost divided by per unit contribution, so that is nothing but 45,000 divided by 6, and the answer you will get is 7,500 units. So if you are able to sell 7,500 units in a month, you will see that after recovering your variable cost, you are left with 45,000 rupees, which is equal to your fixed cost. Okay, so contribution will be 45,000 minus fixed cost 45,000. No profit, no loss, and that is what break even is. So if you are able to sell 7,500 units at the price of 10, that means if your sale figure is 75,000 rupees, then at that point you are not making a profit, you are not making a loss. This is break even. तो ये समझ में आ गया break even. One more example we have done. Now break even is that volume of sales at which there is no profit or loss, and how we calculated it. इसको calculate करने के लिए दो चीज़ें चाहिए. Fixed cost कितना है and contribution per unit कितना है. Now the problem is, कई बार आपको question में number of units की detail नहीं दी रहती. अगर ऐसा है तो आप contribution per unit निकाल नहीं सकते, और अगर contribution per unit नहीं निकाल सकते तो फिर break even point कैसे calculate करेंगे. अगर इसी प्रॉब्लम में जिसमें हमने कैसे कैलकुलेशन करी, फिक्स्ड कॉस्ट 45,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज़ नथिंग बट 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आंसर है 6. ये हमने कैलकुलेशन करी. बट व्हाट इफ यू डिड नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि ये 10,000 यूनिट्स का इंफॉर्मेशन है. इफ दिस वाज मिसिंग, हाउ वुड यू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट? उसके लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट के अलावा एक और टर्म समझना होगा, विच वी कॉल पीवी रेशियो, विच इज नथिंग बट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. सो इन दोज प्रॉब्लम्स जहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, वी यूज पीवी रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ये क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो.